What are the various types of reservoir rock? Theoretically, any permeable and porous rock may act as a reservoir, but in practice, common reservoir rocks include detrital or clastic rocks. Second category or second type of reservoir rock is carbonates, while occasional or third category of reservoir rocks include igneous and metamorphic rocks, but these igneous and metamorphic rocks are most uncommon. Detrital or clastic rocks refers to those rocks. The detrital or clastic refers to those sedimentary rocks which are made up of particle of pre-existing rocks of minerals. जो उन रॉक्स को बोलते हैं क्लास्टिक या डिट्राइटल रॉक्स जो पहले मौजूद जो रॉक्स थी उनकी वेदरिंग से जो पार्टिकल बने हो या जो सेडिमेंट बने हो उनसे सेडिमेंट्री रॉक बन जाए, then such sedimentary rock is called as clastic or detrital rocks. Generally, they are siliceous sandstone or siltstone. Sandstone is most important and common reservoir rock in the category of clastic rocks, and sometimes conglomerate too can be reservoir rock due to its high porosity and permeability. While sometimes fractured shale reservoir is also possible, but it is uncommon in nature. Shale, you people know that shale generally serves as a source rock, but if it is fractured porosity अगर उसमें हो और फ्रैक्चरिंग की वजह से उसकी परमेबिलिटी बन जाए तो ऐसा fractured shale can serve as a reservoir. Second category of reservoir rock is carbonates. Carbonate rocks refers to those sedimentary rocks which are chemically precipitated or biochemically formed. या तो chemically water से precipitation हो जाती है कैल्साइड की, कार्बोनेट्स की, या फिर जो ऑर्गेनिज्म से बन जाते हैं, ऑर्गेनिज्म या बना लेते हैं या ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन से बन जाते हैं. Limestone and dolomite are most important reservoir rock in the category of carbonates. Occasionally, igneous and metamorphic rocks are host of commercial quantities of petroleum when they occur in proximity with the sedimentary basin. Usually they have fracture porosity. बाद औकात igneous और metamorphic rocks में भी पेट्रोलियम कमर्शियल अमाउंट में हो सकता है. अब ये कहाँ से आता है? igneous और metamorphic rocks में तो पेट्रोलियम नहीं हो सकता, न बन सकता है. जनरली जहाँ पे टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन्स हो और उसी बेसन के साथ एडजेसेंट igneous और metamorphic rocks हो, तो ड्यू टू समटाइम्स उसमें फ्रैक्चरिंग हो जाती है, उनमें फ्रैक्चर बन जाते हैं और जो उनके साथ एसोसिएटेड सोर्स रॉक रिजर्वायर रॉक होता है उससे पेट्रोलियम माइग्रेट कर जाते हैं टुवर्ड्स द igneous and metamorphic rocks. But these reservoir rocks are uncommon. They occur sometimes, they occur occasionally. Now the essential properties are